All right. Hi, everyone. Good morning. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Morning, sir. Good morning, everyone. All right. So, I think kitne around 70 students join कर गए, ठीक है? So we'll start our discussion. Meanwhile, others join in. Now, last class में हम लोगों ने factors affecting equilibrium का discussion किया था, and we spoke about concentration as a factor and pressure as a factor, how it influences equilibrium. Now, after understanding pressure as a factor, concentration as a factor का हम लोगों ने theory भी पढ़ा था, as well as we solved one numerical also, right? Yes, sir. Pressure as a factor का हमने सिर्फ theory पढ़ा था, we were not able to do a question on it, so that's what we will get right onto. However, बीच में छोटा सा effect of volume भी हम देख लेते हैं. As a quick summary, ठीक है, if you don't want to get into a lot of details, ठीक है, then you can skip all this part, because whatever is the effect of pressure, उसका opposite आपका effect of volume रहेगा. ठीक है, जैसे आप लोगों ने last class में pressure के effect का discussion किया था. What was the effect of pressure? Shift to the side with less side of moles. So दोनों तरीके करे थे. एक subjective तरीका था, right? The subjective method was based on the statement by Le Chateliers, right? तो exactly जो statement था, क्या था वो? हम लोगों ने जैसा discuss If the किया. pressure is increased, then the system shifts towards the state of lesser gaseous moles. ठीक है, lesser gas moles. ठीक है? Yes, sir. So, Now, given the fact कि हम लोग temperature unchanged रखते हैं in such situations, तो pressure increase करना would mean volume decrease करना. Yes. Yes, sir. So volume decrease करना would means shifting towards lesser gaseous moles, right? तो ये subjective तरीका हो गया आपका, ठीक है? And similarly आप numerical तरीका से भी जो हमने Q और K का comparison किया था, as in Q कैसे change होगा, वो भी आप कर सकते हो. So that's the long story short of how volume का change happens. अच्छा, you might want to also ask me कि sir, what happens if there aren't any gaseous moles, right? What would happen in case of a reaction, say like CH3COH aqueous giving CH3CO minus aqueous plus H plus, right? so Kp becomes 1, right? Or No, Kc. Kp is not defined. Okay, in this case, Yeah, Kc is defined. Kc is It defined, becomes 1. and you would want to say कि अरे यहाँ पे तो gaseous moles है ही नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं है. What you can do is you can just replace gaseous by aqueous. So if volume is decreasing, the reaction will shift towards what? Lesser aqueous moles, right? Or if volume is increasing, the shift will be towards more aqueous moles. Okay? So that can be your simple thought process. Okay? However, यहाँ पे notes लिख रहे हैं, तो notes लिखते हुए I will be a bit more elaborative, a bit more descriptive. ठीक है? Sir. तो यहाँ पे आप notice करना how we are going to proceed. हाँ, बताओ. Sir, आपने LCP yesterday के class में बताया था. Correct. Okay. So, yesterday I was resolving a homework too, so we are given questions based on Le Chatelier's principle also. So, there were questions on effect of concentration. I found 1 or 2 questions like that. So, But then that's solvable without knowing LCP. I know I solved them, but like, हाँ, one was a LCP class का question. homework मैं आपको आज दूंगा. Like I will share that LCP. Yes, sir, but I found questions in the previous homework based on the what was done last class. I managed to solve it, but good. No. Sir, so we have to write this page or not?
हाँ हाँ, मतलब नोट्स के हिसाब से आप लिखो, मैंने आपको सिंपल अंडरस्टैंडिंग यही दी थी। ओके सर। तो यहाँ पर आप लिखो हेडिंग इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम, देन यू राइट द फर्स्ट बुलेट पॉइंट, if volume increases then pressure decreases and vice versa. ठीक है, which we can definitely put as a thought in case of reaction with gaseous species, है ना? Now given that inverse relationship, we can say volume decreases, right? If ठीक है volume decreases, yeah, let me इसको put it in the opposite manner. If volume increases then pressure would decrease, and pressure would decrease means the reaction will shift towards what? Gaseous moles. Towards more gaseous moles. No, sir, lesser. अरे तुम लोग Oh, sorry. I was Don't be- looking at the second point. don't be parrots. दिमाग लगाओ ना, मैंने लास्ट क्लास में प्रेशर इंक्रीज करने पर लेसर गैशियस मोल्स की तरफ बोला था. I saw in my notes I've written in volume decreases, pressure increases. So then I was just reading that. Whatever. अच्छा अच्छा, मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया वॉल्यूम. ठीक है, आपने उल्टा भी लिख लिया तो कोई दिक्कत नहीं. वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, प्रेशर डिक्रीज कर रहा है, तो इक्विलिब्रियम किस तरफ शिफ्ट कर रहा है? मोर गैशियस मोल्स की तरफ, एंड वाइस वर्सा. ठीक है. Yes, sir. Right, in case of reaction with aqueous species, if volume increases then equilibrium shift towards what? Lesser aqueous species. More moles. Oh, sorry, more. moles. I'm so sorry. ठीक है. Now I completely understand, and मैं भी आपके जैसी ही गलती करता रहता हूँ. Why? Because I find the subjective methods always confusing me. Increase, decrease, more, less, like they are always so interlinked that मुझे अगर अच्छा वाला रट्टा है, ठीक है, which I am not really good at, तो I end up making these careless mistakes, exactly like you guys are fumbling. Increase, decrease, more moles, gas moles, वो मैं करता रहता हूँ. That's why I always double check with the mathematical approach. जैसे हमने लास्ट क्लास में भी करा था ना. So what do you mean by increasing volume here? What do you do to increase the volume? Decreasing the pressure. Okay. And in case of the gaseous reaction, तो you increase the volume of the vessel. पिस्टन को बाहर खींच दिया, वॉल्यूम बढ़ा दिया. ठीक है, इतना लिखा सबने? Yes. So why have you written the point for aqueous like in a different manner? Well, like such reactions, they are not sensitive to pressure. जो मैंने इन दो बुलेट पॉइंट्स में थॉट प्रोसेस बताया, वो आपको बताया कि वॉल्यूम के बारे में सोचना है. तो थिंक ऑफ इट इन द मैनर दैट व्हाटएवर हैपेंस विद वॉल्यूम प्रेशर के साथ उल्टा होगा, एंड फिर प्रेशर के साथ जो होगा वो हमने लास्ट पॉइंट में या लास्ट क्लास में सीखा था कि अगर हम लोग प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो वी शिफ्ट टुवर्ड्स लेस गैशियस मोल्स, प्रेशर डिक्रीज करते हैं तो वी शिफ्ट टुवर्ड्स मोर गैशियस मोल्स, राइट? बट लेट्स से इफ आई एम टॉकिंग अबाउट सच रिएक्शन लाइक एन एक्वस फेज रिएक्शन, इस पे प्रेशर का थोड़ा इम्पैक्ट आता है. Yeah, so got it. ठीक है. There are no But the gases. phenomena is same, right? The process is same. हाँ, the thought process is the same. हो गया सर, कॉपी कर. Done. Done. So last line, so 1 minute. राइट. सो अब जैसे मैंने आपको बोला कि ये सब सब्जेक्टिव तरीका अपनी जगह ठीक है. आई लाइक दिस सब्जेक्टिव तरीका फ्रॉम द पर्सपेक्टिव दैट यस इट इज फास्टर, इट क्विकली हेल्प्स मी इन कमिंग अप विद द स्टेटमेंट. However, it comes with the risk of making careless mistakes, and अभी आप देखोगे आज की क्लास में ही
I am going to make you do questions and you will realize कि अरे it is better if we adopt both the methods, double check our answer before finalizing. So उसके लिए the mathematical method, the numerical method is also important. Now last class में मैंने pressure का impact बताने के लिए आपको mathematical तरीका बताया था जिसमें I asked you to focus upon QP. Why did I ask you to focus upon QP? क्योंकि QP के expression में pressure आता है. यहाँ पर I would want you to focus on QC. ठीक है? Because QC के expression में volume आता है. Yes. Right? Now, based on this help that I have given, can I ask you in like a rough manner, ठीक है, वैसे तो नीचे notes हैं, but based upon your mathematical skill, what will happen if volume increases for the following reactions? तो एक So if reaction है, volume increases, delta Ng, so volume increases, so the total V increases. However, if delta Ng is like positive, that's is minus sign. So it will become very like the QC becomes very less. So it becomes less than Kc and therefore forward. Delta Ng can be negative. Yeah, but like let's consider the case right now. This. ठीक है, इन तीन का मुझे आंसर चाहिए, शिफ्ट किधर होगा. These are all gas phase reactions. ठीक है, for the sake of simplicity, if I increase volume, right, then रफ में बता देना मुझे. इसके नीचे ऑलरेडी मैंने ये सब एग्जांपल मेंशन किए हुए हैं, बट आई जस्ट वांट टू गेट एन आंसर. फॉरवर्ड बैकवर्ड फॉरवर्ड बैकवर्ड फॉरवर्ड बैकवर्ड क्या आंसर रहेगा. आई वांट यू टू डेवलप दैट चेन ऑफ थॉट जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में प्रेशर के साथ में प्रैक्टिस किया था. So what have you written in the last with bracket? All gas. All gas phase. Okay. So you've written these below, na? Like down. I want you to put it in. Yeah, he wrote it down. He told that, but I just read it. I was just reading. Okay, तो यहाँ पे हम लोग अब नोटिस करते हैं
इनफैक्ट इस केस में डेल्टा एन जी कैसा रहेगा, पॉजिटिव, यानी कि v का जो टर्म है वो किधर जाएगा, डिनोमिनेटर में। अब मैं डिनोमिनेटर को बढ़ा रहा हूं तो इसका मतलब q का वैल्यू कम हो जाएगा, Yes, sir. तो शिफ्ट विल बी फॉरवर्ड। ठीक है, ये पूरा चेन ऑफ थॉट समझ में आ रहा है सबको? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, दोबारा प्रैक्टिस करें श्रेय, स्मिथ, दोनों ने गलत गलत आंसर दे दिया। यहाँ पे मेरे साथ में बताओ क्या हो रहा है, डेल्टा एन जी क्या है, नेगेटिव। Negative. तो ये नेगेटिव इंटू नेगेटिव v की पावर क्या हो गया, पॉजिटिव। Yeah. तो v किधर है, न्यूमरेटर में कि डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर। न्यूमरेटर में। और अब मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि v बढ़ा रहा हूँ, न्यूमरेटर बढ़ा रहा हूँ, तो q क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, q ग्रेटर देन k हो जाएगा, तो इक्वेशन Yeah, yes. करेगा Backward. बैकवर्ड। समझ में आया? यस सर। Yes, sir. एंड ऑफ कोर्स इस केस में डेल्टा एन जी जीरो है, तो v की पावर जीरो मतलब v बढ़ाओ घटाओ कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, q रिमेन्स द सेम, दैट मींस नो इफेक्ट। So you've written delta Ng is equal to delta N aqueous, but what if they give aqueous species as well as gaseous species? नहीं वैसा What if आपको, हाँ वैसा आपको नहीं मिल रहा है ना, दैट इज व्हाट आई हैव मेंशन्ड कि अभी के लिए यू आर गेटिंग रिएक्शंस जिनमें आप केपी केसी डिफाइन कर सको, बट अगर लेट्स से फ्यूचर में ऐसा क्वेश्चन आता है, ठीक है, जैसा तुमने पूछा, आई थिंक क्वेश्चन सबको समझ में आया? हाँ सर, पहले तो नेग्लेक्ट करते थे ना। नहीं तो मैं जैसे एग्जांपल लिख देता हूँ ना यहाँ पे, ये अपना क्लासिक एग्जांपल चलता आ रहा है स्टार्टिंग से, इसमें एक्वा स्पीशीज भी है ना, और गैशियस स्पीशीज भी है। हाँ सर। राइट, नाउ इफ आई हैव टू विजुअलाइज दिस, तो इसका विजुअलाइजेशन कैसा होगा, so it's ये hydrogen in the reactions. देयर विल बी अ लिक्विड फेज, ठीक है, एंड देयर विल बी अ गैस फेज, लाइक यहाँ पे H2 गैस प्रेजेंट होगा, और Yes. यहाँ पे Zn सॉलिड का टुकड़ा रखा होगा। So you've written plus Cl2. Yes, sir. सॉरी H2 माय गैस, ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, HCl एक्वस और ZnCl2 एक्वस, राइट। अब आपको क्वेश्चन में स्पेसिफाई करके देंगे, क्यू का एक्सप्रेशन तो आप लिख लोगे, क्यू का एक्सप्रेशन क्या होगा, ZnCl2 प्रेशर ऑफ H2, राइट, अपॉन हाँ सर। Cl का कॉन्सेंट्रेशन, HCl square. ठीक है। अगर मैं HCl का कॉन्सेंट्रेशन के बारे में बात करूं, तो ये मोल्स ऑफ ZnCl2 अपॉन मोल्स ऑफ HCl का स्क्वायर, ठीक है, इनटू मोल्स ऑफ H2, ठीक है, अपॉन वॉल्यूम, ठीक है, No sir. इनटू RT, Oh, ठीक है, और यहाँ का जो वॉल्यूम है, sir, the volume is in the numerator, na? रुक जाओ, दैट विल बी एक्वस वॉल्यूम, ठीक है, दिस विल बी द गैस फेज वॉल्यूम ना, ये Yes, sir. Vg है और ये V एक्वस है, ठीक है, अलग अलग होंगी ना, वाई वुड बी सेम। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? Yes. रिपीट कर सकते ये प्रेशर ऑफ H2 Sir. इज इक्वल टू nRT बाय V, और V कौन सा है, V ये जो खाली स्पेस का वॉल्यूम है कि नहीं? हाँ सर। Yes. हाँ सर, गॉट। और ये जो मोलर कॉन्सेंट्रेशंस हैं, मोल अपॉन वॉल्यूम, वो तो इस सोल्यूशन का वॉल्यूम होगा ना, यहाँ पे ये जो सोल्यूशन रखा हुआ है उसका वॉल्यूम लगेगा ना, यस सर। राइट। तो ये कॉम्प्लिकेटेड सा एक्सप्रेशन बन गया। अब Yes. क्वेश्चन में स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि आप जो भी चेंज करना चाह रहे हो वो क्या करना चाह रहे हो, इस वॉल्यूम को इम्पैक्ट कर रहे हो कि इस वॉल्यूम को इम्पैक्ट कर रहे हो, अकॉर्डिंगली फिर अपना आंसर डिजाइन होगा, है कि नहीं? Yes. Right, so that is the complicated question which we are not dealing with right now.
because the questions that we are dealing with right now are such that जिनमें या तो यूनिफॉर्मली सब एक्वस स्पीशीज हैं या यूनिफॉर्मली सब गैशियस स्पीशीज है. ऐसे मिक्स ऑफ गैशियस एक्वस वाले क्वेश्चंस हम लोग अभी नहीं कर रहे. कभी करेंगे हम लोग ये? अभी नहीं कर रहे तो कब करेंगे? That's what I was going to. Ionic equilibrium? नहीं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में करेंगे. ठीक है, वहां पे आपको ये नर्स्ट इक्वेशन पढ़ाएंगे, उसके साथ में करवाएंगे. ठीक है, तो अभी आपको ऐसे क्वेश्चंस की चिंता करने की जरूरत नहीं है. ठीक है? Yes. ओके, कमिंग बैक. यहां पर गिवन दिस बैकग्राउंड, ये लिख लेंगे अपन. अच्छा 2 मिनट. और जो लोग लिख ले वो लोग फिर ये क्वेश्चन भी ट्राई कर ले. So V is in denominator or it is in numerator. Is it really necessary calculation? मतलब आपको It समझना, depends. that's an important point in our chain of thought now, because when we are increasing or decreasing volume, how it is going to impact Q depends upon where V is in numerator or denominator. Acha, okay, got it. मतलब इसीलिए अभी हो क्या रहा है, मतलब what is a common mistake which students make typically is वो क्या करते हैं, इसको और इसको याद रख लेते हैं, बीच का पूरा थॉट प्रोसेस भूल जाते हैं. ठीक है, दिस इज समथिंग विच इज अ वेरी कॉमन थिंग दैट आई हैव ऑब्जर्व्ड. यहाँ का और यहाँ का याद रख लेंगे और फिर वो पोपट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ हम लोग गए विद दिस चेन ऑफ थॉट ना कि वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा था तो शिफ्ट फॉरवर्ड हुआ. अगर मैं यहीं पर इफ वॉल्यूम डिक्रीज करके लिख देता तो शिफ्ट बैकवर्ड हो जाता ना. हाँ. Got it. ठीक है, तो जो इम्पोर्टेंट है दैट इज द चेन ऑफ थॉट. इसलिए मैंने यहाँ पे अलग अलग एग्जाम्पल लिखे हैं. So is this a question from the booklet? Yeah. Which exercise? Get equipped में. Okay. Get equipped में I think fill in the blanks जो है उसमें third question I think. So what's the reaction? You have N2O4 and NO2 in equilibrium with each other, no? I know, sir, but which direction? Is it 2NO2 gives N2O4 and N2O4 gives 2NO2? Well, in this question, it won't matter. That's why the question did not mention it. Okay.
बट अगर तुम कर ही रहे हो तो तुम ये लिख लो, बिकॉज देन हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग तुमको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा. हाँ सर. ठीक है, N2O4 गिविंग 2NO2 लिख लो. ऊपर वाला लिख लिया सबने? Yes. So 1 minute. 1 minute. ऑलराइट, आई होप आप लोग लास्ट क्लास का जो अपना क्वेश्चन था उससे जो हम लोगों ने मॉडिफाइड फॉर्मेट ऑफ एनालिसिस सीखा था वो फॉलो कर रहे हो? Yes. Right, what was that modified format of analysis? Original equilibrium, disturbance, shift, new equilibrium. Correct. Now most likely you have followed the format, but उसमें एक मिस्टेक जो आपने करी होगी वो मैं हाईलाइट कर देता हूँ. आई थिंक यहां तक तो सब सही होंगे इनिशियल इक्विलिब्रियम पे, है ना? लाइक इट इज स्ट्रेट फॉरवर्ड दिया हुआ है ना, 4p0 is N2O4 and 2p0 is NO2. तो यहां से अगर मैं आपको kp निकालने के लिए बोलूंगा, वैसे तो पूछा नहीं क्वेश्चन में, बट वी नो दैट इट इज यूजफुल इन अपकमिंग इक्वेशंस, तो आपने kp निकाल के रख लिया होगा, है कि नहीं? द कैच वुड बी, यहां पर आप लोगों ने मिस आउट किया होगा, विच इज अ लर्निंग फ्रॉम दिस क्वेश्चन, दैट डिस्टर्बेंस क्या होगा यहाँ पे? वॉल्यूम डबल्ड हुआ ना, तो Yeah. अब्रप्ट चेंज इन प्रेशर हुआ, है कि नहीं? वॉल्यूम डबल करते ही जो मेरे प्रेशर्स थे वो हाफ हो गए ऑफ व्हाट दे वर ओरिजिनली. Yes. ये आपने नहीं लिखा होगा, तो इसको लिखो एज योर डिस्टर्बेंस. ठीक है, राइट? अब उसके बाद में शिफ्ट होगा. शिफ्ट किधर होगा? More gaseous modes. अगर मैं वॉल्यूम बढ़ा रहा हूँ, प्रेशर कम कर रहा हूँ, तो मोर गैशियस मोल्स. वेयर आर मोर गैशियस मोल्स? On Right L upward. On the right hand side, that means the equilibrium will shift forward. ठीक है, let me double check using the numerical method also. तो यहाँ पर डेल्टा NG मेरा पॉजिटिव आ रहा है, implies QP के एक्सप्रेशन में P is in numerator, है कि नहीं? एंड P यहाँ पे मैं डिक्रीज कर रहा हूँ, implies Q डिक्रीज कर रहा हूँ, implies शिफ्ट किधर होगा? फॉरवर्ड. ठीक है, तो yes, the numerical method also confirms that the shift is in the forward direction only. तो यहाँ पे मैंने शिफ्ट में लिख दिया -P and +2P, right? I did not hesitate to take variable.
मैंने मान लिया ना, ये स्मॉल p वेरिएबल ले लिया कि ये माइनस पी हुआ है, ये प्लस 2p हो रहा है कि नहीं? Yes, sir. So हाँ, डिस्टरबेंस में ऐसा हुआ ना, आप यहाँ पे नोटिस करो ना स्मिथ, वॉल्यूम डबल करा तो प्रेशर हाफ हो जाएगा ना ऑफ व्हाट इट वाज ओरिजिनली. दिस इज समथिंग दैट वी नो अबाउट गैसियस Yes, स्पीशीज. sir. Got it. टेम्परेचर तो अनचेंज्ड है, टेम्परेचर के बारे में कुछ बोला ही नहीं जाता यहाँ पे. अच्छा, अब इसके बाद हम लोग क्या लिखते थे नेक्स्ट? न्यू इक्विलिब्रियम, है ना? Yes. तो सिंपल है, यहाँ पर न्यू इक्विलिब्रियम हम लोग लिख लेंगे 2p0 minus p और ये p0 plus 2p. How do we solve for this small p? KP. Right, we understand that kp will be valid for both the initial and the final equilibrium, so we use that and solve for the small p. ठीक है, notice करना, small p is not the answer. The answer that is asked is equilibrium पर pressure due to NO2. ठीक है, so this is actually the answer, p0 plus 2p. Right, based on this, अब I'm giving you the task of at least doing the calculations by yourself in a proper manner and get me the answer. ठीक है, तो मैं थोड़ा जूम आउट कर लेता हूँ. यहाँ तक का आपको मैंने पूरा कॉन्सेप्चुअल बता दिया है. अब उसके आगे थोड़ी सी मैथ्स आई एम एक्सपेक्टिंग यू टू डू. फटाफट फटाफट करके बता दो, डोंट टेक टू मच टाइम. Done, sir.
ओके, क्या आ रहा है हमारे इनका वैल्यू? So M is 4, N is 1. ठीक है, मेक सेंस. No, wait. Actually, yeah. Yeah, got the same. हाँ, मतलब this is the value of P that you get, but this is not the answer. As I said, the question is asking partial pressure of NO2 at equilibrium. So P0 plus 2P, and then you simplify it. You will get this as the expression, which gives you yes M and N values. Yeah, sir. Like मैंने भी वही पे रखा था, but then I got it later. तो ये भी एक ऑप्शन रखूंगा मैं एग्जाम में अगर पूछूंगा तो, because I know that an expression which matches with an options, the euphoria is so great कि अरे सॉल्व हो गया, ऑप्शन से मैच कर गया, वाह वाह वाह, इसे आंसर मार्क करेंगे. So don't set the next empty, please. मजा कैसे आएगा फिर? क्या पूछ रहे हो श्रेय? फॉर जेई मेंस लेवल सॉल्विंग which all exercises of the module should be sufficient? FBO or get equipped to mains? मेंस के लिए इतना बस है सर. बस तो कुछ भी नहीं है, मतलब लाइक इतना आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं. So nothing is ever enough, so for mains or advanced. हाँ, तो आपको आइडिया लगेगा कैसे क्वेश्चंस आते हैं. देन उसके बाद आई हैव आल्सो शेयर्ड विद यू जेई मेंस के PYQs, राइट? So that should So be when do we do the PYQs? Because right now, I mean, finishing the module and all is really taking time. Other books. अभी नहीं कर पाओगे. आई थिंक आई हैव reiterated it many times. मैं दोबारा बता देता हूँ because I think आप जैसे अभी मेरे साथ में चैप्टर स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है? तो you can say start of chapter. What are the important things that you are going to do? ठीक है? You are going to revise or resolve class notes, class examples, and do the homework, which I'm going to share from the booklet and the DPPs. Okay, that is more than enough for you when you are going to be doing the chapter. Almost 80% chapter हो चुका है आपका. उस time पे what you should do is start working on formula sheet. ठीक है? You have to start developing a formula sheet कि क्या क्या कर लिया हम लोगों ने chapter में, उसको summarize करना है. Of course, you will have to also be doing homework only. Once the chapter is done, ठीक है, उसके बाद आप क्या करोगे? ठीक है, आपका होमवर्क तो चल ही रहा है, वो आप विदाउट एनी प्रॉब्लम्स करते जाना है, डिस्कशंस करते जाना है. एंड इसके बाद में once you are done with the formula sheet, validate how good your formula sheet is against PYQs, JEE मेंस के PYQs, because उसमें फॉर्मूला ड्रिवन क्वेश्चंस ही रहते हैं प्राइमरी. What percentage of the chapter are we done with? 80% हुआ तो संडे तक हो जाएगा ना. हाँ. What percentage are we done with? So we are done with around 70% of the chapter. 80% मान लो actually. आज का लेक्चर और एक लेक्चर संडे 3 घंटे का लेक्चर है. संडे तक हो जाएगा हमारा चैप्टर. So but Sunday you are dedicated mostly to doubt discussion. हाँ सर, आपने होमवर्क भी कभी हुआ तो डाउट्स लेंगे तो. हाँ सर. तो अगर टाइम बचेगा तो कर लेंगे, नहीं तो नेक्स्ट वीक में थोड़ा सा स्लिप ओवर रहेगा. So मतलब एक्स्ट्रा क्लास? मतलब व्हाट? थोड़ा नेक्स्ट वीक में चैप्टर करना पड़ेगा सर मुझे. हाँ. अच्छा वैसे.
ठीक है. So when you said mn minus n divided by m, so 2 to mn, so it's not m multiplied by n, right? No, those are digits. So that's why I got stuck. So. हाँ, वो ठीक है. That's also a हाँ knowledge सर, for you. सेम है, मुझे भी वही बात. Okay. Next factor की तरफ आगे बढ़े. So the next factor is effect of addition of inert gas. As per the word, inert will not participate in the reaction. Okay. But what it will do is it can impact, say, pressure or volume of the vessel, and that can cause the equilibrium to shift. ठीक है. Inert substance जो है वो directly तो कुछ reaction नहीं करेगा. That's why it is being called as inert. However, it can change the pressure or volume of the vessel, and that can impact our equilibrium. So let's observe the effect of addition of inert gas, and we'll observe it under two conditions. One is when we have constant volume conditions, right? Visualization wise, it will be a closed rigid vessel. And the other is when you have under constant pressure conditions, right? So that will be when you have, let's say, a massless frictionless piston. एक एक करके ऑब्जर्व करते हैं. पहले let's talk about what is there on the left hand side. What will happen if I add inert gas under constant volume conditions? The answer is no effect. So that is a straightforward answer to start with. How there is no effect? We can understand this based upon the QC value. ठीक है, जैसे इनिशियल इक्विलिब्रियम पे QC is equal to Kc, and you can write QC as Qn into V की पावर माइनस डेल्टा Ng. अब आपने इनर्ट गैस डाला है, तो will the moles of reaction species be impacted? No. Right, because inert species है, वो तो किसी के साथ ना रिएक्ट कर रही है ना कुछ कर रही है, तो जो मोल्स थे रिएक्शन स्पीशीज के वो एज इट इज रहेंगे. व्हाट अबाउट द वॉल्यूम? हमने बोला है ना कांस्टेंट वॉल्यूम है, रिजिड वेसल है, तो वॉल्यूम में इंपैक्ट नहीं हो रहा है. तो एज अ कॉन्सिक्वेंस वी आर सेइंग दैट बोथ आर अनअफेक्टेड. दैट मींस QC does not change. If QC is not changing, then there is no shift in the equilibrium, right? Yes, sir. समझ में आया इतना? So, but But sir, partial pressures बदलेंगे ना? yeah, Good. So I was hoping. Yeah, तो वो दूसरे सेक्शन में है ना. हाँ, वही. नहीं, वहां पे भी मैंने QC से ही करा है. But I will answer your question. ठीक है. Now, किसने पूछा था? प्राजना ने. किसने पूछा क्वेश्चन? Yes, sir. That QC से आपने जज करा सर. What if we went by using QP? How will that show us that there is no effect? कोई दिक्कत नहीं है. QP से भी मैं आंसर कर सकता हूँ, ऑल्दो थोड़ी सी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है. ठीक है, यहाँ पे नोटिस करना. I will have to write QP as QX into P total raised to the power of delta Ng. Now यहाँ से आपको दिखेगा कि अरे इनर्ट गैस डाल रहे हैं कांस्टेंट वॉल्यूम पर, तो ये तो बढ़ेगा P टोटल. Yes. ठीक है, बट साइमल्टेनियसली ये QX कम हो जाएगा. ये दोनों एक दूसरे को कॉम्पनसेट कर देंगे. कैसे? नोटिस करना. QX आई कैन राइट QN अपॉन N टोटल की पावर डेल्टा Ng, है कि नहीं? जो QX था मोल फ्रैक्शंस, दैट इज मोल अपॉन टोटल मोल्स ना, तो टोटल मोल्स को मैंने अलग कर लिया. तो ये क्या हो गया? QN
into P total upon N total raised to the power of delta Ng, है कि नहीं? हाँ सर. तो अगर वॉल्यूम एंड टेम्परेचर कांस्टेंट है तो क्या होता है? P by N कांस्टेंट रहेगा. Yes, sir. Yes sir. तो मैंने इनर्ट गैस डाला तो मोल्स बढ़ गए टोटल, तो प्रेशर भी बढ़ गया टोटल, तो ये वैल्यू तो कांस्टेंट ही रह गई ना. तो क्यूपी भी मेरा क्या रहा? कांस्टेंट ही रहा ना. इट्स नॉट चेंजिंग, तो मेरा इक्विलिब्रियम इफेक्ट नहीं हुआ. Okay sir, got it. Yeah, thank you. ठीक है, तो ये क्यूपी से सोचने का तरीका हो गया. मैंने यहाँ पर क्यूसी से सोचने के लिए लिखा है. ठीक है. नाउ साथ में नोटिस करना what will happen if we add inert gas under constant pressure conditions, right? So if we add inert gas under constant pressure conditions, then as a result of addition of inert gas, volume will increase, and the subjective answer would be, as per the Lee-Chatelius principle, that equilibrium will shift towards more gaseous modes. Or you can think numerically. You write the QC ka expression. In this, depending upon the sign of delta Ng, you will know where the volume will lie, in numerator or denominator. And because of addition of inert gas, volume is increasing, right? So you will know what will happen to Q, whether it will increase or decrease. And accordingly, you will know about the shift, whether it is going to be forward, backward, or in case delta Ng 0 hai, to there is no effect. समझ में आया? Yes. ठीक है, तो इसको लिख लो. And don't just blindly copy. That is actually one of the things that I used to do in the offline classes also. That मैं समझा देता था, and then I used to very quickly rub the board, and I would force you to rethink of what I had taught and then write it by yourself in your notes. So, but then sometimes we miss out stuff. So that is where then you ask doubts. That is when you get more clarity. That is what we would be more and more happy about, rather than you just having your brain somewhere else and copying everything that is there on the board. So that's like being a Xerox machine, which many of the students used to do. उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था क्लास में क्या चल रहा है. Their objective was to come to class, and this is sincere students I'm talking about. Those who are not sincere, so they don't bother coming to the class itself. They would bunk. But then those who were sincere, dedicated, would want to come to the class, would still do this. That समझ में तो आ नहीं रहा है, तो कम से कम notes पूरे बना लेते हैं, बाद में समझ लेंगे. What's the point if you're sitting and not understanding though? नहीं वो When होता will you है. understand? See, it's something which I'm saying it's not always the case. अभी हो गया किसी का ब्रेकअप, कोई खोया हुआ है अपने ख्यालों में, उसको नहीं पता है क्या करना है, जीवन उसका एकदम ऐसे जग सुना सुना लग रहा है उसको, तो वो ऐसे ही बैठा है, बस नोट्स बना रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है, बस इतना है कि हाँ नोट बना लेंगे, बाद में पढ़ लेंगे. तो होती है, पर्सनल सिचुएशन भी आ जाती है कभी कभी. Yes, sir. So I was thinking in physical class we could record this class with someone's camera. So because yes, that would be nice. That would be nice, but that will not be happening. What? So in offline, do we have classes 6 times a week? Yeah. You will remember the good old days where you used to get up every morning, go to the designated place, study, and then come back to home. Yes. वो जो Can अभी you explain the no effect again? अरे v की पावर 0 हो गया,
तो समथिंग की पावर 0, अभी समथिंग को बढ़ाऊं घटाऊं, v की पावर 0 बन ही रहेगा ना, यस सर, समझ। तो उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है q पर। यस सर। So this chapter got over very, very early and fast. Like this is the fastest we finished a chapter. Is it going to happen for ionic equilibrium also? नहीं, ionic is the So in change in Ng less than 0, you've written V is the dash of QC. v is in the denominator, dr वो denominator, Oh, अच्छा, okay. और ये numerator। So I thought direction for something. नहीं वो ठीक है, मतलब मैंने ही इन्वेंट किया है वो शॉर्ट लिखने का तरीका। पर वो समझ गया था सर। हाँ, बट समझ के लिखोगे तो ही फिर डाउट आएंगे ना। हाँ सर। You won't be a Xerox machine then. So I write along with the teacher, but then after that I read it again to understand it. You have to, that is the way of learning. Those are the reasons, or that is actually the reason why it is very important to be attentive in class. सुबह उठकर नहा के बैठना, so that you have the maximum concentration. रात को प्रॉपर नींद लेकर क्लास में बैठना ताकि आपको क्लास में स्लीपी फील नहीं हो. Those are all small dots that connect towards your larger learning. If you are not disciplined in that manner, तो फिर there would be certain classes in which you will feel groggy, you will feel sleepy, and you know how one class connects with others. मतलब मैंने आज की क्लास जैसे स्टार्ट करी, अगर किसी ने कल की क्लास अटेंड नहीं करी होती या मिस हो गई होती तो उसके लिए आज की क्लास वुड बी काइंड ऑफ अ टॉर्चर ओनली. चल क्या रहा है? Yes, sir. All classes are interconnected. या एक क्लास मिस हुई तो कम से कम वो चैप्टर तो आपका नुकसान हो ही जाता है. Yes, so you always have to cover up before the class. पर सर ऑनलाइन में तो रिकॉर्डिंग देख लेंगे, ऑफलाइन में क्या करेंगे? कुछ नहीं होगा. Exactly. Nothing will happen in offline. You will have to be like completely focused and dedicated. That is why the offline way of learning is more effective. No, you don't have the backups lying around. Because of the backups only you feel कि हाँ हमारे पास ये option है वो option है. So, but honestly, the recording is very useful because you can go back to stuff, and that helps a lot. मतलब वो ऑफलाइन में फील भी आती है ना, वो क्लास वाली, मतलब एटमॉस्फेयर होता है. A lot of time also. What? That wastes a lot of time also. What waste time? Yeah, that is Watching recording. Watching recordings. Yeah, it's the worst. Waste It's the time. You don't worst. watch the recording that much. It's just that sometimes it happens you miss out something in class that you just cover up later. Well, that is what I'm saying. That is what we are going to find out. और मतलब ऑफलाइन रहा तो ऐसा नहीं हो सकता ना कि पहला क्लास अगर अटेंड किया तो दूसरा मिस कर दिया, क्योंकि फिर अटेंड करना ही पड़ेगा. Yes. फिर तो पूरा एक महीने का वेकेशन हो जाएगा. So he's planning if he can. नहीं, I'm saying कि if you attend the first class, you have to attend all the classes. कभी एंड में लगता है कि नहीं इसको ऐसा नींद आ रहा, वो रहा, वैसा नहीं. हाँ वो सारे that is the reason ना, मतलब effectiveness कम हो गई है. The more backups you have, the more flexibility you have, the natural human tendency is to become more complacent. Yes. Yes. I have forgotten what offline lectures are like. I'm not kidding. So आएगा you'll get to know. सर कांस्टेंट प्रेशर के इसमें क्यूपी में कुछ चेंज आएगा क्या? तो प्रेशर नहीं चेंज होगा, बट जो टोटल मोल्स थे वो चेंज हो जाएंगे ना. इनर्ट यस, तो प्रोसीजर सेम ही रहेगी मोर और लेस. हाँ यस, गॉट इट. ओके, देन नेक्स्ट फैक्टर देखते हैं यहाँ पर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर. नाउ दिस फैक्टर is slightly different from the other factors,
because the other factors that we have studied till now, they were impacting Q, the reaction quotient. However, this factor impacts K, the equilibrium constant itself, right? How will it impact? Like increasing temperature would increase the equilibrium constant, or will it decrease? Any intuitive guess? Sir, what effect? Increasing temperature would increase, right? Increasing temperature. Wait, It depends upon the conditions now about volume and temperature. I mean, So it volume and depends on pressure. endothermic and the exothermic. volume increases, and I think the equilibrium constant increases. No, it depends on endothermic and exothermic. It depends on delta Ng also, no, then. Yeah. It would depend upon whether the reaction is endothermic or exothermic. Yes, sir, that's what I'm saying. That is what it would depend on. So let's say if I ask you to intuitively guess, if there is an endothermic reaction, okay, then for that endothermic reaction, if temperature increases, what will happen to K, equilibrium constant? Increase. So it decreases. Okay, it decreases. Guess first करना है आप लोगों को. Sir, K will increase now. The answer is for endo, temperature increases, K K increases and For exo, if temperature is increased, then the equilibrium constant would decrease. Okay, that's the short summary answer. But we would want to go into some details of it. So let's talk about those details. The discussion is going to start with an equation that relates delta G, delta G naught, and reaction quotient. It's an important starting point for us right now because we can't get into its derivation. Its derivation would require us to actually get into the details of what activity is, and वो हम लोगों ने पहले भी skip कर ही दिया था. So this is our starting point. That delta G, you remember delta G is the free energy change of a reaction, right? Yes. Under general conditions, where delta G naught was the free energy change, Gibbs free energy change of the reaction under standard condition. Do you remember what was standard condition as per thermodynamics? Yes, sir. For which substance? Right, gases के लिए partial pressure 1 bar, molar species या dissolved species के लिए molar concentration 1 molar, है ना? And yes, Q, reaction quotient, it represents the activity of reaction species with respect to their standard state. तो इन तीनों को relate करते हुए, based upon a derivation, we get this equation. Of course, as I said, we are not getting into the derivation. This is our starting point, that delta G is equal to delta G naught plus RT ln Q. And at equilibrium, we understand that delta G is 0 and Q is equal to K. इतना लिखो. So general conditions means any conditions that the reaction is currently being carried out under, right? Like the general conditions means whatever temperature, pressure you choose to carry out the reaction under, right? हाँ, correct. And the species, like जैसे मैंने आपको बताया था ना, N2 plus 3H2 giving 2 ammonia, right? What would be the standard condition for this reaction? Pressure 1 bar, partial pressure 1 bar. Reaction species are at 1 bar, gaseous species, है ना? Yeah. General condition would be P1 bar, P2 bar, P3 bar, right? Yes.
लिखा इतना सबने? No, sir. So 1 minute, sir. Yes, sir. So 1 minute. सर रिएक्शन क्वेश्चन का आपने लिखा है विद रिस्पेक्ट टू देयर स्टैंडर्ड स्टेट, मतलब लाइक आई डिडंट गेट द मीनिंग. स्टैंडर्ड स्टेट जो होता है स्पीशीज का, वो हमने डिफाइन किया हुआ है थर्मोडायनामिक्स में. यस. As compared to that, how the reaction species, how they are participating in the reaction, that is what is captured by activity. Got it. Now, इसको अगर हम आगे सॉल्व करेंगे, यहाँ तक लिख लिया ना सबने अब? Yeah. So I'll put delta G as 0 and Q as K at equilibrium. So I'll get delta G naught as minus RT ln K. And I also know that delta G naught is equal to delta H naught minus T delta S naught. Right? So I will replace that and get the answer in the following manner. That delta H naught is equal to T delta S naught minus RT ln K. यहाँ तक का क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, लिखो इतना. Done, sir. No, sir. Give us 2 minutes. Done, sir. Okay, now एक assumption हम लोग लेंगे that is not a bad assumption, it's an okay assumption, that delta H naught and delta S naught, we'll assume them to be constant, will not vary them with temperature. Although we have learned about it in thermodynamics, you remember Kirchhoff equation that used to speak about this thing exactly? Yes. How delta H varies with temperature. So for the sake of simplicity only, and that is something which we see in our textbooks also, be it NCERT or be it any other standard textbooks like Atkins and all, तो उसमें भी यही simplicity के साथ में आगे बढ़ा जा रहा है. That delta H naught and delta S naught, we are assuming not to vary much with temperature. So we can write for say temperature T1, equilibrium constant is K1,
For temperature T2, equilibrium constant is K2. And delta H0 and delta S0 are the same. Okay, so if I subtract the two, I get a relationship relating equilibrium constants at different temperatures. So I get ln K2 by K1 is equal to delta H0 by R into 1 upon T1 minus 1 upon T2. Or if I want to write it in terms of log, okay, I know the log conversion. So it will be equal to delta H0 upon 2.303 R into 1 upon T1 minus T2, where K2 is the equilibrium constant at T2 temperature, K1 is the equilibrium constant at T1 temperature. इतना लिखो. Sir, can you scroll up, please? ऊपर कुछ रह गया क्या ऊपर का लिखा? एक मिनट, पहले तुम इतना तो लिख लो, फिर ऊपर का भी दिखा देंगे. So in one you've written ln and one you've written log. Yeah, because 2.303. Yeah, 2.303 से उन्होंने डिवाइड किया है. So when offline starts, a routine is going to change completely. So how do you adapt to that? It will take time, you will figure out. ऑफलाइन कितना घंटा रहता है सर? सेम ही रहेगा. टाइम टेबल ऑलमोस्ट सेम ही रहेगा हम लोग का. सो शायद डाउट लेक्चर्स थोड़े आगे पीछे होंगे. सर T1 इनिशियल टेम्परेचर बोल सकते हैं ना, and T2 is the changed. So I mean, नहीं, T1 is the like initial temperature and T2 is new temperature, some final temperature. yeah, yes, I said the same thing. So after classes are over and offline, how much time do we usually have to ask doubts? Look, class में doubts discuss होंगे ना? No, like suppose if we're solving some other book. So that will be after class. So how much time do we usually have? Well, depends upon how your classes are intervalled, and typically after the classes happen also, then teachers stay back for some time. Like we have. It is the availability of teachers only. It depends. तो जैसे अभी होता है ना कि क्लासेस खत्म हो गई, उसके बाद में खत्म हो गई. ऑफलाइन में क्लासेस खत्म हो गई तो उसके बाद में the teachers are there at the center for 1 or 2 hours, and then you can ask your doubts. Yes. Done. Done. So okay, now you can judge depending upon the sign of delta H what would happen to K if the temperature is increased. तो शॉर्ट स्टोरी जो मैंने आपको बताया था वो यही था that एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो टेम्परेचर बढ़ाने पर K बढ़ जाएगा. एक्सोथर्मिक है तो टेम्परेचर बढ़ाने पर K कम हो जाएगा, राइट? And accordingly the shift will be forward or backward. How it is mathematically proven वो अब आपके लिए easy है समझना.
Okay, so you can understand the math behind it as well. लिख लो इसको. So here, what value of R will we use? Now, typically, अगर हम लोग डेल्टा H जो है, उसकी यूनिट्स अगर मान लो जूल किलो जूल में लिखा, तो R का वैल्यू क्या लिखना चाहेंगे? 8.314. अगर मैंने कैलोरी किलो कैलोरी में लिखा तो 2. यूनिट्स पे डिपेंड करेगा. Yes. लिखा सबने? Yes. So one. So on the right, isn't there an error? On the If right. reaction is exothermic, temperature should decrease now. नहीं, we are not changing the. Okay, I'll help you visualize what is it that we mean by change of temperature. Okay, I think I've done it multiple times, but it will be good for everyone else to also understand. ठीक है, डाउट सबको समझ में आया? किसने पूछा था ये? वंश ने ना. तो यहाँ पर नोटिस करना, we are analyzing reactions. ठीक है, our discussions are about reaction at given temperature. ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल N2 gas plus 3H2 gas is giving 2 NH3 gas. ठीक है, इसका मैं आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट देता हूं at some given temperature, say 25 degree centigrade. What do I mean by this? Reactants before the reaction are at room temperature conditions. Then whatever reaction extent was supposed to happen, that happened. Whatever heat was to be released or absorbed
with the surroundings, that gets done, and finally the products return back to the same room temperature conditions. And that is what our analysis is about. Yes. Yes. ठीक है, whatever heat was to be dissipated or absorbed, वो surrounding से हो गया. Surrounding is vast, right? So the temperatures are before the reaction and after the reaction the same. Between में क्या हुआ, I don't care. Yeah. Okay. ठीक है. Now what I am doing is, as part of this discussion, I am asking you कि ठीक है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर मान लो ये जो रिएक्शन है, ठीक है, इसका कुछ अल्फा होगा, ठीक है, या इसका कुछ के होगा, ठीक है, दिस इज के ऑफ 25 डिग्री सेंटीग्रेड. मैं पूछ रहा हूँ कि यही रिएक्शन अगर मैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर एनालाइज कर रहा होता, ठीक है, व्हाट डू आई मीन बाय 100 डिग्री सेंटीग्रेड? दैट आई वुड बी स्टार्टिंग विद N2 and H2 एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड. मैं ऐसे रूम में इनको रखता, ठीक है, ऐसी सराउंडिंग्स में रखता जो 100 डिग्री पर है, ठीक है. Then whatever they are supposed to react, they react. Whatever heat is supposed to be given or absorbed happens. And finally my product ammonia is also at 100 degree centigrade. ठीक है. That is how my reaction is. And उसके लिए मैं पूछ रहा हूँ कि K कितना होगा. So this K and this K will be different. Yes, I understand. ठीक है, सबको समझ में आया? How we are talking about variation of K with temperature? Yes. So the main thing is where we are taking the reactants at a temperature, letting the reaction happen, and then products cool down to the same temperature. So then it doesn't matter like what happened. What happened in between, I don't care. Whatever heat was supposed to be exchanged got exchanged. Okay. But then that heat must have escaped now. So it goes into the surrounding. Surrounding is vast, right? Yes. वो exothermic reaction था, तो heat goes into the surrounding. If it was endothermic, then it would have absorbed the heat from the. So then the point of endothermic and exothermic is only for the sign of delta H. Yes. Okay. ठीक है, लिखा है इतना सबने? So So in offline, will we get tired of lectures that we get right now? Like, तुम कई बार तो ऐसे क्वेश्चंस पूछते हो ना, मतलब मुझे हंसी आ जाती है. Arya, you have 2 weeks to be ready for it. Mentally prepare I yourself know, for but it, like, okay? 2 years. I'll tell you, you should start preparing yourself up for it. Start getting up at 6 o'clock or 5:30, depending upon how far you are going to stay from your center. In the mornings, take some walk outside. Okay? Come back, take a shower, and be ready to sit in your online lectures also. So it gives you a 2 weeks time to get your body accustomed to the morning preparations. Okay? Then, and this is something which I am also doing. Okay? It's a question for me as well. So I also try to, okay? Of course, I was not able to do it today, but I have been doing it since last 4 or 5 days, that I am getting up early morning and like tuning myself to the morning routine. Okay, once it happens, morning part is sorted, then you have to take care of your food aspect. Okay, so you have to ensure that when you come to the classes, you don't come without dabba. ठीक है, अभी तो घर पे हो, तो घर पे तो फ्रूट्स खा लिया, कुछ भी खा लिया, चल जाता है. But you will have to ensure. You guys to actually stay with your parents, but I don't.
So I will have to ensure that my dabba is there with me when I am at the center. In between the classes, I'll have to also ensure that my eating routine is also adjusted. Then of course वापस जब आना है क्लासेस के बाद में, राइट, तो उस टाइम पर you will also have to work on your stamina. You know, लास्ट क्लास तक खींचते हैं अपने आप को, फिर उसके बाद में घर जाना है, तो वो धीरे धीरे पिक होगा. So, but why are we starting offline? Yeah, it only seems like more effort and more waste of time. Yes, sir. Yes, sir. Actually, sir. You can directly start from 12th class. No, we shouldn't start only. Yes. Yes. If you after they finish the syllabus, then I'm okay with starting offline. But this seems like a massive waste of Yes, waste. sir. The same, we're getting quality education online also. What's the point of starting? See, there are always going to be two schools of thought, and accordingly, I think that is how the model is going to evolve going forward. ठीक है, there will be, जैसे अभी तो क्या होगा, I think in the month of March, this will be completely, driven offline. We'll see how it works, and उसके बाद में हो सकता है, I am not sure, but it could happen that there could be a complete online and a complete offline. ठीक है, no mixing, no hybrid kind of setup. So those who are interested can opt for the choice that they would want. This is where all the good teachers might just be in one place to say that. Sorry? Yeah, sir. The It's very teachers which we have, they would scatter away, right? Like we won't have them again in offline. So that is something Yes, that is sir. going to be a transition. So that will be very hard to choose because coming offline has many benefits. I mean, because just speaking to some people who are doing well now, it changed my attitude towards the whole preparation. So imagine if we interact regularly. So definitely the biggest inertia that is coming for the students is कि अरे सुबह उठ के कैसे जाएंगे, बहुत effort है, because the online, तो वो हो गया ना, मतलब that is how the online things induce a behavioral change, no? आज की तारीख में when you get an option of ordering food via Zomato and Swiggy, so that has changed the behavior. Now I would be at times reluctant कि नहीं जाना है बाहर, अच्छा ऑर्डर कर लेते हैं घर पे. It might not be that great experience, but ठीक है, काम तो हो ही रहा है ना, decent tasty food मिल ही रहा है घर पे, माइक्रोवेव है ही सही, गर्म कर लेंगे. तो उसी तरीके से depending upon how you let your behavior gets changed, you will get your preference whether to go for offline or online. सबके अपने अपने advantages, disadvantages हैं. You should, in fact, I am assuming that this must be the topic of debate everywhere in schools going on right now. So why do parents want offline? So it's very annoying. So I've seen many parents just ask for offline all the time, and then they don't realize that you They are can bored of study. us. Our parents are bored of us. The parents want their peace of mind, they want their privacy, they want you out of their homes. That is what they want. So, but then it's more than that, because firstly, some children, some are not disciplined. Okay, that's the first thing. Secondly, I mean, now it's improved, but in the start, it was very hard to study at home because there was too much noise and all that. But everyone adjusted at home. But then maybe in some places it's not. Maybe. So, but still after people have to. Yeah, everybody had different endless Starting conversation. was hard. Guys, this is an endless conversation. How about you finish the chapter? We can have this conversation after that. प्राजना को गुस्सा आ गया है, तुम लोग टाइम पास मत करो.
अरे you could have तो gone and होने done वाला है something सर else. सबका, तो ऑफलाइन होने ही वाला है, मतलब बिकॉज करके कुछ होगा नहीं किसी का No, भी, but by talking about our dukh dard, you know, we feel better. सबको बांटने का है. Yeah, but तो तुम लोग जब साथ में रहोगे तो और अच्छे से बांट पाओगे. तो साथ में नहीं रहेंगे. कौन साथ में रहेगा? हाँ वही. सब लोग अलग हो जाएंगे अभी. So out of the people who speak, everyone's divided. Like 3 Ah, people yes, in sir. the center, 2 people in the other center. True. लिखा ये सबने ग्राफ बनाया? No, sir. We're talking. So I managed to write it. So I'm very dedicated. Okay, congratulations. सुबह ही होगा उमर, मतलब आई थिंक वही 7:30 या 7 बजे लेक्चर हो सकता है. 7 तो नहीं करेंगे आई थिंक टू स्टार्ट, मे बी 7:30 या 8 कर दें. सर कैन यू प्लीज स्क्रॉल अप? मैंने ऊपर का देखा नहीं आपने क्या लिखा. सर इज दिस अ मॉड्यूल क्वेश्चन? ये वाला तो लिख लिया था ना, यही तो कर रहा था मैं. हो गया. क्वेश्चन 47 पेज 35. ओके थैंक्स. तो यहाँ पर एज यू कैन सी graphically also you can understand the same concept that for endothermic temperature बढ़ाने से K बढ़ेगा. So when you draw the graph of ln K versus 1/T, right, you will find it to be a straight line because we are assuming delta H0 and delta S0 to be constant. And if it is endothermic, तो delta H0 पॉजिटिव है और ये नेगेटिव साइन से स्लोप क्या हो जाएगा इस ग्राफ का? नेगेटिव. तो यहाँ पर अब आप नोटिस करोगे अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा दैट मीन्स 1/T का वैल्यू कम करूंगा तो यू कैन सी ln K का वैल्यू बढ़ रहा है. दैट मीन्स K का वैल्यू बढ़ रहा है. एंड सिमिलरली ऑन द राइट हैंड साइड नोटिस करना अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा मतलब ये नेगेटिव और ये नेगेटिव, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या हो गया? स्लोप पॉजिटिव हो गया. तो ये ग्राफ ऐसा रहेगा. ठीक है. एंड यहाँ पर अगर मैं अब टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ, इफ आई एम इंक्रीजिंग टेम्परेचर दैट मीन्स 1/T आई एम डिक्रीजिंग. तो कैन यू सी माय वैल्यू ऑफ ln K इज डिक्रीजिंग. दैट मीन्स K is decreasing. So the same thing that we saw numerically can also be visualized graphically. Yes, sir. सर मुझे लाइक उसका कैलकुलेटिव न्यूमेरिकल सेक्शन जो है ना वो उसका एप्लीकेशन कैसे होगा वो ही नहीं समझ रहा सर. कंफ्यूजन आ रहा है. एक क्वेश्चन है ना आपके लिए. तो इसमें भी सर ग्राफ रिलेटेड हो रहा है ना. So this is very basic, sir. What the Yeah, question is? actually, What is that? question is very basic. तो ग्राफ देख के भी हो जाता है. मतलब बेसिक है तो अच्छी बात है ना. तुमको इससे भी दिक्कत हो रही है कि इतना बेसिक क्यों पढ़ा रहे हो? हाँ ये तो अभी तो हमें ऐसा ऐसा लग लगता रहा है नहीं है कि फिर ये हमारे मतलब फिर वो सीरियसनेस नहीं आता सर. अच्छा. So we mean the basic stuff but then also give harder stuff also. मिल जाएगा धीरे धीरे. यू विल गेट लर्निंग कर्व है ना. तो कई बार इजी चीजों से स्टार्ट करेंगे फिर पिकअप करेंगे ना डिफिकल्ट चीजें भी. So what was above this? उसके ऊपर वो था ना जो हमने न्यूमेरिकल एनालिसिस करा था. Yeah. इसका आंसर क्या रहेगा इस क्वेश्चन का? So option B. Isothermic endothermic. Yes. तो यहाँ पर यू कैन सी टेम्परेचर इंक्रीज करने पर K डिक्रीज कर रहा है. तो मींस दिस इज एक्सो. एंड यहाँ पर वी आर सीइंग दैट टेम्परेचर इंक्रीज करने पर K इंक्रीज कर रहा है. तो दैट मींस दिस इज एंडोथर्मिक, राइट? So which exercise is this term? Page FBO. 35, question 47. FBO में होगा. What? FBO. लिखा ऊपर वाला सबने? Yes, sir. चलो ये वाला क्वेश्चन भी आंसर कर दो. This is also from the textbook. So I think it's
So just waste. हाँ मतलब careless mistake नहीं करनी है. Sir, this question is from which exercise? So it's B, right? Page Question number 46. SBO question 46. This is So B. option B. Yeah, it's B. So Which question is this? Like on which page? The graph one is on 35. page Question 35. 45. Question 46. Yeah, question 46, 47. what's the point? What's the point of noting it down? Like either we're gonna have to solve for FPO or like you're gonna solve the whole module. So you But end then up you can't just write the answer without knowing which question you answered. makes sense. So like फटाफट करो. I need to. so option B, so we should have logged whatever. तो यहाँ पर आंसर आएगा आपका यस ऑप्शन बी. ठीक है. Those who got D made a mistake of not recognizing ln versus log. यहाँ पर log k वर्सेस 1/t का ग्राफ है ना. तो log k वर्सेस 1/t के ग्राफ का जो स्लोप है उसमें ये 2.303 r टर्म आएगा ना. तो जो स्लोप है आपका दैट इज माइनस डेल्टा एच नॉट अपॉन 2.303 r. ठीक है. लॉन वाला मत यूज कर लेना. लॉन वाले में ग्राफ लॉन के वर्सेस 1/t होता, बट यहाँ पे लॉग के वर्सेस 1/t है. तो यूज दिस एक्सप्रेशन. एंड यहाँ पर एज यू कैन ऑल्सो नोटिस द यूनिट्स आर ऑल्सो क्रूशियल. They will help you decide what the value of r would be. क्या वैल्यू रहेगा r का? 2. करेक्ट. ठीक है. समझ में आया ये? Sir, why is R2? तो R का आपने कैलोरी पर मोल में लिया ना. हाँ. हाँ. Why is what? क्या पूछ रहे हो? So he asked why is R2? R2 because options कैलोरी में दिए हुए थे ना. तो R का वैल्यू कैलोरीज के यूनिट में 2 होता है ना. Yes, sir. एक्सक्यूज मी सर. सर क्या आपने थर्ड होमवर्क दिया था क्या? बिकॉज आई नो ओनली कि 2 ही He दिए said थे. it right now in the group. आज दिया ना. आज ही Oh. दिया. So now I'm Okay. going to add to that homework, right? So नहीं, that is something which we are supposed to do and discuss on Sunday. हाँ. And जो होमवर्क 2 है वो हम लोग आई थिंक वेडनेसडे को या थर्सडे को जब भी डाउट लेक्चर है तब डिस्कस कर रहे हैं. So Wednesday. But so you said that there'll be a good number of questions. अरे, so I'm थोड़ा disappointed. Because these are a lot of questions. Solve them first. अरे what? It'll take 2 hours and finished. Bro, last time I tried to do it in jaldi. You can't do it jaldi. It takes time. अच्छा, You can't. There's fill-ups, true/false. So let's quickly summarize our learnings. There's one true/false. Okay, so you can summarize. Get equipped to advance के 1 or more than 1 में आएंगे ये questions.
So यहाँ पर जैसे आपको पूछा जा रहा है, for the gas phase reaction, you have been given the reaction and the delta H value of this, and you are asked that how can we increase the concentration of C2H4, right? Increasing concentration of C2H4 means we would want to shift in the backward. So all four are correct. ठीक है. So what will lead to that? एक एक करके यहाँ पे जज करना शुरू करते हैं. तो सबसे पहले बात करा जा रहा है increasing temperature. Now because this is exothermic, तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या हो जाएगा? K बढ़ जाएगा. Yes. And as a consequence equilibrium backward shift कर जाएगा. Oh sorry, K कम हो जाएगा and as a consequence equilibrium backward shift कर जाएगा. तो ये ऑप्शन तो करेक्ट है ना? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? Yes. Exo implies T increases, K decreases. तो ये backward shift हो गया. Decreasing the pressure. How do we judge pressure का impact? यहाँ पर मैं देखूंगा तो डेल्टा Ng नेगेटिव है, राइट? तो प्रेशर इज इन डिनोमिनेटर ऑफ Q, है कि नहीं? Yes. Yes. So if denominator decreases, pressure decreases, then Q क्या हो जाएगा? Increases. Increases implies shift किधर होगा? Backward. तो ये भी ठीक है. Okay. What about removing H2? So decreases reactants, therefore Q increases. Q is products upon reactants. Yes, sir. And यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं? remove कर रहे हैं reactant को. Reactant को कम करेंगे तो फिर Q बढ़ेगा ना? Yes, sir. Q बढ़ेगा implies the shift is going to be in the backward direction. Yes, sir. Right. Same here. Q is equal to products upon reactants. And यहाँ पर C2H6 is the product. और मैं add कर रहा हूँ product को बढ़ा रहा हूँ. So if I'm increasing the numerator, then Q increases. Again, the shift would be backward. समझ में आया? Yes, sir. किसी को किसी ऑप्शन में डाउट है? If no, then get me the answer to this question. So can I say chat में डालना. So I sent it to you. ठीक है कृष. Correct answer. Sir, how did you conclude that we require the backward shift? Because क्वेश्चन में बोला है ना C2H4 का concentration बढ़ाना है, तो C2H4 का concentration कैसे बढ़ाएंगे? Oh yes, sir. Yes, sir. Backward जाके तो बढ़ाएंगे ना? Yes, sir. Right? So 1 minute, sir, 1 minute, please. नहीं Krish, like Krish part 2, तुम्हारा आंसर correct नहीं है. And we have Krish part 3. Oh my God, how many Krish do we have in this class? So there are many. Many मतलब 3 तो count हो गए, और भी है क्या? Yes, sir. There are 4 or 5, I think. 4 or 5, yes. Seriously? Yes, sir. Yes, sir. 4 है. So, सर सारे क्रिश बोल रहे हैं. ये मतलब Krish is like the 90s का या early 2000s का राहुल. 4 क्रिश है. So how do we know if it's exothermic or endothermic?
Correct. So the words of the question are going to be very, very important over here. I think many of you did not recognize the fact that solid NaNO3 है. Endothermic, right? ठीक है. Solid NaNO3 है. Oxygen is liberated, means that is gaseous. NaNO2 is left behind, means it is It's again solid. Yeah. Solid, yeah. Change in Ng is ये positive. solid है, ये भी solid है, and oxygen liberated is gaseous. So as a consequence, A and B option both are incorrect because Solid do not affect anything. हाँ, solid / liquid का there is no effect. ठीक है. Otherwise you would have marked A and B as option, saying कि A जो है that is a product, तो product add करेंगे तो reaction backward जाएगा, might seem correct to you. या NaNO3 reactant है तो you are like reactant add करेंगे तो reaction forward जाएगा, तो वो ऐसे ठीक लगेगा आपको. But then these are not the answers. Why? Because these are solids. Okay. Then the other hint that is coming from the question is that this is heated. ठीक है. It is heated means it is endothermic. So that will help you answer the third option. Increasing temperature favors the forward reaction. So that is correct because यहाँ पर आपका endothermic दिया हुआ है. ठीक है. What about the last one? Increasing pressure. इसको हम लोग कैसे जज करते हैं? Right. तो यहाँ पे अगर आप रिएक्शन लिख रहे हो, Balance the equation. तो इससे आपको समझ में आएगा डेल्टा Ng कैसा है. Negative. नेगेटिव नहीं, नहीं, positive. Positive. Sorry, positive. Positive है ना. हाँ. डेल्टा Ng is positive. तो increasing pressure would shift the reaction forward. So Sorry, why backward. is Lesser gaseous modes की तरफ, backward की तरफ. हाँ. why is heated endothermic? Because sometime I remember once you had said it was exothermic also. नहीं. There was a question where Heat is we taken give in, the na? reaction and then they asked us for the delta H ka sign, and then the PCl5 was heated, and then you said it's heated, so it's exothermic. And Like देखो दोबारा एक बार notes पढ़ो and then It's heated, that means heat is supplied. So like वो absorb करता है. नहीं उसको Heat notes is करने taken दो. in. तुम notes पढ़ो ढंग से and फिर discuss करेंगे. okay. वैसे तो ये वाला आ गया है तुम्हारे सामने क्वेश्चन वापस, बट चलो तुम फिर भी नोट्स पढ़ना. इसका आंसर बताओ एंड आई वांट यू टू बी नाउ कंप्लीटली एक्यूरेट. So again, can I send it? चैट पे डालो. Could you wait a second to let us note the previous one down a little bit? So I sent it. हाँ ठीक है क्रिश, करेक्ट. ठीक है, जिसने लिख लिया है बस ये चीज और नोट कर ले. In the end, that catalyst does not impact the equilibrium. It only changes the time taken to achieve equilibrium. And so we are not concerned with time taken of now. Correct. Yeah. एक और ऑप्शन करेक्ट रहेगा प्रार्थना. नहीं क्रिश, लाइक क्रिश एफ इफादरा. Sir, I was pressing shift enter and it only went enter. That's why only A came. अच्छा. But A is incorrect anyway. हाँ ठीक है वंश, तुम्हारा भी आंसर करेक्ट है. It is not affected at all. राइट. सो यहाँ पर हम लोग अगर जज करेंगे
So 1 second, sir. I was writing the other stuff also. So. This is no effect. Yes, because constant volume. Yes, sir. Constant volume. यहाँ Again, पर अगर हम प्रोडक्ट ऐड करेंगे तो इससे तो बैकवर्ड चला जाएगा ना. Yes, sir. Yes, sir. Inert gas at constant pressure and increasing volume at of the container दोनों actually एक ही चीज हो गई. Yes, sir. तो यहाँ पे delta Ng is 1, right? So what was the thought process? Positive है, यानी कि V is in the denominator of QC, right? So if V increases, then QC क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा. Implies shift किधर होगा? Forward. Forward. तो ये दोनों मेरे आंसर रहेंगे C and D. And E, of course, like you know, same thought process. Q is equal to product upon reactant. And ये reactant जो है इसका वैल्यू मैं बढ़ाऊंगा तो Q का वैल्यू कम हो जाएगा, शिफ्ट फॉरवर्ड हो जाएगा. ठीक है, क्लियर है सबको? Yes, sir. बस ये लास्ट पैराग्राफ लिख लो. Effect of catalyst. That a catalyst does not alter any of the thermodynamic parameters of the reaction. Equilibrium constant, alpha, delta H, delta G, delta S, कोई सा भी thermodynamic parameter change नहीं होता है. A catalyst only alters the time taken. Sir, how does it alter the time taken? That we'll study in the chapter where we'll deal with time. That is chemical kinetics. So I have a question. फटाक से पूछो. No, sir, I'm just wanted to ask, like, now, if we have time, should we read ahead in these chapters? Should we do what? Should we read ahead in these chapters? Read ahead? Like, go ahead and solve sums on our own. Like, yeah, definitely. Haven't taught also, I'm saying. No, so, इसमें जैसे, let's say you are saying कि you have some time at your disposal. So we go ahead. ठीक है. So in that case, you have an option of trying difficult questions. ठीक है. Oh, okay. Say from the get equipped section of the booklet. ठीक है. Or maybe pick up some questions from Neeraj Kumar or N. Avasthi and take a shot at them. Okay, sir. ठीक है. Or if you have some Sengage or Ranjit Sai also, that's fine. But only focus on the difficult questions. No need to resolve the easy ones. Yes, sir. Got it. Thanks. So when we're doing Narendra Avasthi, we just do level 3 and level 2. Yeah. We should be able to do this chapter maybe in 1 or 2 classes, max 2 classes. Sir, what you have written after key? और कितने factors बचे हैं? नहीं हो गया factors Sir, हो गया बस अब इसका थोड़ा application वगैरह और बचा है simultaneous equilibrium बचा है. सर आपने की के बाद अल्फा लिखा है वो? अल्फा हाँ करेक्ट. एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन मतलब कोई रिएक्शन मान लो 20% जाके इक्विलिब्रियम अटेन कर रहा है तो आप कैटलिस्ट डाल दोगे तो उससे 20% नहीं चेंज होने वाला है. वो तब भी 20% अचीव करेगा. पहले मान लो 20% एक दिन में अचीव कर रहा था, कैटलिस्ट डाल के इट माइट हैपन इन सम सेकंड्स और मिनट्स. ठीक है. So मतलब प्रोसेस फास्ट करता है या स्लो करता है? और दैट डिपेंड्स. Well, majorly catalysts are used to increase the rate, but there are examples of negative catalysts also that can decrease the rate. Okay. So, is the formula sheet literally only for formulas or like other things also? Because just looking at formulas is not enough to revise the chapter. So, like, what's the point of formula sheets? Formula sheet is not just formulas. Formula sheet helps you understand and summarize the chapter at a topic or a subtopic level. Understand how you went in a topic by topic manner covering that chapter. Then within each topic, what were the important points that you learned? Okay. Were there important formulas? Were there some important graphs? Were there some common careless mistakes that were made? All of that gets captured. So
that is like the summary you get out of the chapter, not just ठीक है कि फॉर्मूला लिख लिया. अभी इसमें केमिकल इक्विलिब्रियम में फॉर्मूला तो छोटा सा ही है कि k का एक्सप्रेशन है. Yes, sir. It's more about the approach, more about the careless mistakes that you have to avoid. वो चीजों का ध्यान रखना है ना. That is how you have to summarize the chapter. And are we making it in such a manner that before a major test it's enough to revise from it? हाँ, definitely. So, but then it's very tough to decide what to include and what not to include. Please Yeah, understand. that's the question. That is how you learn, no? See, the thing is that you are worried since the beginning itself that I have to make the perfect formula sheet. Nobody is asking you to make the perfect formula sheet. You do it and then see how effective it is. Validate it against the PYQs. Understand if it is helping or not. You need to like tone it down or you need to beef it up. Whatever it is that you have to do will come as the second iteration. ठीक है, आप बनाओ तो से यूज तो करना शुरू करो, उसके पहले ही दुनिया जान के क्वेश्चंस खड़े कर दोगे. Okay, so we just try it. हाँ. And then we see what. We make it, we test it if we Okay, are. okay. I'll try it today. Nice, mate. It does not. ठीक है, चलो. Bye. Right, guys.